Hello friends. So after completing our third lecture, okay, now left only I think 5 or 6 sums in first part, 8.1 exercise and one illustration left. Okay. चलो तो let's continue with the question number 10. But अभी तक जितने भी सम्स कंप्लीट हुए हैं, बराबर, जितने भी सम्स हमने अभी तक जितने भी सम्स 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स जो कुछ भी हो, बराबर, 11 and 13, it means one method over. Now this is your second method as a knot. Second method, just remember this knot. Area of the region bounded by the curve and line. It means here line means आपने जो अभी तक सम्स देखे वहां पर ऐसे कुछ वैल्यू थी, लाइन्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, ये लाइन नहीं, बट लाइन इक्वेशन होगा, बराबर, लाइन का कोई इक्वेशन होगा लाइक दिस इज अ लाइन और नॉट एक्स वाई एंड कांस्टेंट मींस लाइन. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, तो कर्व एंड लाइन इट मींस कर्व में भी एक इक्वेशन होगा, लाइन एक इक्वेशन होगा. तो कर्व एंड लाइन एरिया इज given by a equal to mod of I, where I equal to integration here limit, but question curve minus line, and one thing fix कि here x limit, तो here all question in x form, here y limit, then all question in y form. This thing is fixed. X limit, question in x form, curve minus line, it means from the curve subject y, from the line subject y. So if subject is y, तो question is in x form, तो x form question from the curve minus x question x form question from the line. X limit, तो here x question in x form, y limit, तो question in y form. Okay. Now what is your limit? Lower limit, upper limit. Okay. तो a and b जनरली हमने तो ऐसे यहाँ पर लिख दिया था कि चलो a and b, but a and b are the intersection of curve and line. Okay, I repeat, a and b are the intersection of curve and line. बराबर, अब अगर आप कोई भी इंटरसेक्शन फाइंड करो तो आपको पॉइंट मिलेगा x and y. तो इंटरसेक्शन पॉइंट लाइक ऐसा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, सपोज एक्स वाई एंड एक्स वाई. मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हियर एक्स लिमिट, तो कर्व माइनस लाइन फिक्स, कर्व माइनस लाइन. एक्स लिमिट, तो क्वेश्चन इज इन एक्स फॉर्म. वाई लिमिट, देन क्वेश्चन इज इन वाई फॉर्म. ओके. नाउ अगर आप एक्स लिमिट सिलेक्ट करो, चलो दिस पॉइंट दिस एक्स टू दिस एक्स, तो मेक द हियर एक्स फॉर्म, एंड दिस वाई टू दिस वाई, देन मेक द हियर वाई फॉर्म. अभी आपको क्या देखना है कि भाई हाउ टू डिसाइड कि क्वेश्चन और लिमिट एक्स फॉर्म क्वेश्चन एंड लिमिट वाई फॉर्म. बराबर. चलो तो हम यहाँ पर डायग्राम अरेंज करते हैं. डायग्राम में मैं आपको सब बता दूंगा, बराबर, कि कब आपको एक्स लिमिट फॉलो करनी है, कब आपको वाई लिमिट फॉलो करनी है. मीनिंग फिक्स, एक ही जस्ट मीनिंग ऑफ दिस नोट इज A and B are the intersection. It means पहले हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ही फाइंड करेंगे. ओके. इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपको बोला कि 2 पॉइंट आपको मिलेगा, बराबर. नाउ हियर एक्स लिमिट और वाई लिमिट. एक्स लिमिट तो क्वेश्चन इज इन एक्स फॉर्म, वाई लिमिट तो क्वेश्चन इज इन वाई फॉर्म. जस्ट रिमेंबर कर्व माइनस लाइन. ओके. चलो नाउ टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन. Bounded by the curve and line. Okay. So curve is a parabola and line is in standard form. Here line is not value ki x equal to 1, x equal to 2. Line is in ax plus by plus c equal to 0 form. Okay. So curve x square equal to 4y means parabola and line. Okay. चलो तो before we draw any diagram, first finding the intersection point. Okay. चलो तो here curve is x square equal to 4y.
line is x equal to 4y minus 2. From the question we cannot decide any limit or any question. Next, finding the intersection point. Okay, so intersection point, there are many methods. Comparing the value of x, comparing the value of y, elimination method, many methods are possible. Putting the substitute the value of x or y. Okay, चलो हमारे लिए यहाँ पर इजी क्या होगा, 4y कंपेयरिंग, तो हमें इजीली इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. ओके, चलो कंपेयरिंग 4y. सो हियर 4y इक्वल टू x स्क्वायर and here 4y equal to x plus 2. So x square minus x minus 2 equal to 0. Okay, now this is the equation solving. Product 2, subtraction 1, x minus 2, x plus 1 and equal to 0. So x equal to 2 and x equal to minus 1. Both the brackets equal to 0, so x equal to 2 and x equal to minus 1. Substituting x equal to 2 in the line, then x equal to minus 1 in the line, and finding the value of y. So x equal to 2, substitute here. So 4 2s are, sorry, x equal to 2, okay. X equal to 2 here. So 2 plus 2, 4. 4y equal to 4, so y equal to 1. And x equal to minus 1. Minus 1 plus 2 plus 1 and by 4, so y equal to 1 by 4. Then write. So intersection points of curve and line are 1.21 x and y, so 2 1, and second point minus 1 and 1 by 4. Next work is diagram. Okay, first one, draw the parabola. अब this is the first sum, जैसा मैं आपको यहां से बोल रहा हूं बस वैसा ही करना है आपको. Okay, first drawing the parabola. X square equal to 4y, this is a parabola. X square, so up or down, and standard form, so origin. Standard form, this is the standard form of the parabola. So from the origin, and x square, so up or down, upside or downside, and standard form from the origin. Now check other side. Other side value is positive, so upside. From the origin, upside diagram. Okay. So making the diagram. From the origin, upside. These 2 points are intersection points of curve and line. So intersection points always on the curve and line both. Intersection point always on the curve and line both. दोनों का intersection है, दोनों पर होगा point. तो next one curve ready. Next one, put the point on the graph. So first point 2 1. Okay, this is a curve. Now 2 1, x equal to 2 and y equal to 1 on the curve. So x equal to 2 and y equal to 1. Suppose here point is 2 1. And next, minus 1 and 1 by 4. X equal to minus 1 here and 1 by 4. Suppose point is here. Okay. आपको लाइन ड्रॉ करनी है.
बराबर, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। This point is -1 and 1/4. Okay. So this is your line. Okay. This is your line and this is our curve. What is the curve? X square equal to 4y. And equation of line x equal to 4y minus 2. So area bounded by the only curve and line. So just curve and line. So curve and line. So this is your area or not? तो एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि भाई व्हाई दिस एरिया इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो यहां पर भी कर्व है, कर्व भी है, लाइन भी है, बट एक्स एक्सिस नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो ये भी आ जाता है। बराबर, ओनली कर्व एंड लाइन, तो दिस इज अवर एरिया। डन। चलो नेक्स्ट वन। बस अभी तो हमारा क्वेश्चन था वो हो गया। एरिया bounded by the curve x square equal to 4y and line x equal to 4y minus 2, बराबर, x equal to 4y minus 2 is given by a equal to mod of I, where I equal to integration. Now listen very carefully. जो आपको पता है कि कर्व एंड लाइन मीन्स कर्व माइनस लाइन एंड आइदर लिमिट ऑफ एक्स और लिमिट ऑफ वाई। रिमेंबर दिस नोट। मैं आपको यहाँ पर एज ए नोट नहीं दे रहा हूं, हम कहीं पर एज ए नोट नहीं लिखेंगे। जस्ट रिमेंबर, इफ यूर कर्व ऑफ साइड तो फॉलो एक्स लिमिट एंड कर्व राइट हैंड साइड देन फॉलो वाई लिमिट। दो ही केसेस होंगे, अप और डाउन। अप डाउन तो फॉलो एक्स लिमिट, राइट लेफ्ट देन फॉलो वाई लिमिट। रिमेंबर दिस पॉइंट। अप साइड तो फॉलो एक्स लिमिट, कर्व अप साइड तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन अप साइड फॉलो एक्स लिमिट, देन राइट साइड फॉलो वाई लिमिट। इंटरसेक्शन इज अप साइड, क्लियर आपको दिख रहा है कि हियर इंटरसेक्शन इज वर्टिकल, एक्स लिमिट, horizontal means right hand side, तो y limit, तो here intersection of side. Okay, तो now curve minus line fix a to b, तो x limit फॉलो करनी है हमें। इंटरसेक्शन कर्व बोथ ऑफ साइड, तो x लिमिट -1 to 2, -1 to 2, -1 to 2, कर्व माइनस लाइन, -1 and 2 are the values of x. So we need the here question in x form. So from the curve minus line, from the curve subject y. So this is your curve. So y equal to x square by 4 minus, and here y equal to x plus 2 by 4. dx. Ready? 4 outside. It means 1/4 outside, integration -1 to 2 x square minus multiply, so minus x minus 2 dx. Now integration. So I equal to 1/4 bracket x square integration is x cube by 3 minus x is x square by 2 minus 2 is 2x and limit -1 to 2. Now upper minus lower. I 1/4 and bracket. Upper limit is 2.
2 cube 8. 8 by 3. 2 square 4. 4 by 2 is 2. And 2 2s are 4. Minus lower limit. Lower limit is minus 1. Minus 1 cube is minus 1. Minus 1 by 3. Minus 1 square is a plus 1. So 1 by 2. And minus 1. Minus 2 into minus 1 plus 2. Right? So I equal to 1 by 4, 8 by 3, minus 2 minus 4 minus 6, minus sign multiply. So plus 1 by 3, plus 1 by 2 and minus 2. Now 3 into 2, 6 LCM. I equal to 1 by 4 and 6 LCM. Now 6 LCM. Here 3, so multiply by 2. 8 2s are 16. Here no denominator, so all 6 multiply, so minus 36. Here 3, so multiply by 2. Here 2, so multiply by 3. And here no denominator, so multiply by 6, so minus 12. Okay. Now therefore I equal to 1 by 4 and bracket. Now this calculation. Plus value 16, plus 2, 18, plus 3, 21, plus 21. And minus 36, minus 12, minus 48. 21 minus 48, minus 27. By 6. Now divide by 3. 1 by 4 and minus divide by 3. 9 by 2. So I equal to minus 9 by 8. Now therefore area A equal to mod of minus 9 by 8. So A equal to plus 9 by 8. Area always positive and a positive आंसर. डन. तो ऐसे जैसे जैसे हम सम करेंगे आपका जो भी कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. डन. तो वन सम ओवर विच इज नंबर 10. नेक्स्ट वन टेकिंग द एग्जांपल नंबर 4. जो अभी हमने जो है वो सम किया क्वेश्चन नंबर 10. बराबर. जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि दिस टाइप ऑफ सम्स आर गिवन इन 8.2 एक्सरसाइज. एक ही सम ऐसा था जो 8.1 में था. बराबर. बट मेथड आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है. हाँ, वापिस हम याद करेंगे 8.2 में. ओके. नाउ अभी जो सम है 2-3 सम तो सर्कल वाले सम है. 4 सम्स अबाउट सर्कल. क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, दिस वन एग्जाम्पल 4 एंड 12 ऑल अबाउट सर्कल. बराबर. चलो तो यहां पर भी एक न्यू मेथड है, आपको याद रखनी है. बट वन थिंग फिक्स कि ये कर्व सर्कल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल. सर्कल मींस कर्व एंड लाइन. कर्व एंड लाइन, x का x axis but curve and line, and both are in x and y form. So definitely we have to find the intersection point. Okay. चलो तो find the area bounded by the circle and line y equal to x and x axis in the first quadrant. First quadrant यानी ये तीनों एरिया आ जाए. बराबर. तीनों पार्ट जहां पर बाउंड है तो वो पार्ट हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन पार्ट, बाउंडेड रीजियन. ओके. चलो हियर सर्कल is x square plus y square equal to 32. So we know that this is the standard form of the circle. So center 0 0 and x square plus y square equal to r square. R square equal to 32. So r equal to 4 root 2. 4 root 2. Our center and radius. And line is y equal to x or x equal to y, कोई भी हो.
चलो तो क्या करेंगे हम, पुटिंग x इक्वल टू वाई इन द सर्कल। हेलो, सो टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट यूज एनी मेथड कंपेयरिंग सेम वैल्यूज, पर यहां पर सेम वैल्यू नहीं है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू x इन द सर्कल। ओके, चलो, सो एक्स स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट करें, चलो x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई, सो वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड इक्वल टू 32, 2y स्क्वेयर इक्वल टू 32, y स्क्वेयर 32 by 2 16, so y equal to plus or minus 4, and then what about x, y equal to plus or minus 4, so x also plus or minus 4 because x and y are same, so x also plus or minus 4. Alright, so intersection points of circle means curve and line are plus 4 so plus 4, minus 4 so minus 4, it means 4 4 and minus 4 minus 4. Now making the diagram. Okay, so first always make the circle, then put the intersection point and then draw the line. Diagram ready. Alright. Center 0 0, radius, so first making the circle. Ready? And putting x and y. Now putting points 4 4 minus 4 minus 4 on the circle. Okay, so x equal to 4 and y equal to 4, but before we put points, what is the center? Center is 0 0 and radius is 32. We know that center to the point is called radius, so this distance is called radius. So this point is this distance, this point center is 0 0 and this is called radius. Radius is 4 root 2, so this point is 4 root 2 comma 0. Okay, it means here 4 root 2, तो 4 कहां पर होगा, 4 यहां पर होगा, so x equal to 4 and y equal to 4, point is here. And second minus 4 minus 4. Okay, x equal to minus 4 and y equal to minus 4. चलो, तो x and y both minus 4 is here. Now joint, and this line is passing through the origin. This line passing through the origin, check perfectly. What is the equation of line? Y equal to x, so 0 0 satisfies, so passes through the origin, automatic मिल रहा है हमें. So putting the points 4 4 and here minus 4 minus 4, but minus 4 का हमें कोई भी यूज नहीं करना है because we are finding the area in the first quadrant. हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ का कोई यूज नहीं है. ओके, चलो, नाउ 3 डेटा, सर्कल y इक्वल टू x, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इफ वी टेक दिस एरिया, तो यहां पर सर्कल भी है, लाइन भी है, बट x एक्सिस नहीं है. So definitely this area is our answer because in this area circle, line and x axis. Okay, चलो यहां पर सर्कल एंड लाइन है ना, एक डिफरेंट मेथड है, वो आपको अलग से याद रखनी है. बराबर, कर्व माइनस लाइन ही करेंगे हम यहां पर. बराबर, ऑब्वियसली कर्व माइनस लाइन एंड वेरी इजी. अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी सम्स अभी किए वैसा ही सम हो जाएगा. चलो, हियर x इक्वल टू 4, तो डेफिनेटली हियर 4, हियर x इक्वल टू 0,
Here x equal to 4 and here x equal to 4 root 2. Okay? Now, tell me one thing. आप वो सब भूल जाओ. Curve minus line, वो सब भूल जाओ. This area is made by the only line or not? This part is made by the only line or not? So 0 to 4 and line. And this part is made by the circle or not? Zero, 4 and 4 root 2. This part is made by the line or not? Only line. So 0 to 4 and 0 and 4 are the values of x. So question is in x form. So what is your line? Y equal to x. So x dx. So this part area is over. And this one is made by the circle or not? तो यहां पर लिमिट क्या होगी? ओनली दिस पार्ट 4 to 4 root 2 and circle. So circle 4 and 4 root 2 are the values of x. So find y from the circle. So y square equal to 32 minus x square. Y equal to under root 32 minus x square. It means our full area equal to sum of two areas. Area made by the line, so this part, and area made by the circle, so second part. Okay? बस एक ही मेथड आपको याद रखनी है. Area bounded by the circle x square plus y square equal to 32 and line y equal to x axis in the first quadrant is given by a equal to आप a1 plus a2 भी ले सकते हो कि a1 equal to mod of i, a2 equal to mod of i, बट आपको mod of i करना है एंड एडिशन ही करना है. तो टू पार्ट्स, फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया. तो हम क्या लेंगे? फर्स्ट एरिया मीन्स mod of i1 एंड सेकंड एरिया मीन्स mod of i2. हेलो वेयर I1. Now only focus on I1. I1 means first part. First part 0 to 4 and made by the line. 0 to 4 and what is your line? 0 and 4 are the values of x. So we need here x. So this is our line. Subject y. Y equal to x dx. So I1 integration of x square by 2 and 0 to 4. Okay? Therefore I1 upper minus lower 4 square 16 by 2 minus 0. 16 by 2 minus 0. Therefore I1 equal to 8. Answer of I1 is ready and which is positive. Next one I2. So this is your I2. 4 to 4 root 2. 4 to 4 root 2. And this one, smaller one is made by the circle. And 4 and 4 root 2 are the values of x. So subject y. What is the y? So y square equal to 32 minus x square. So y equal to under root 32 minus x square. Okay? dx. So this is a formula or not? Under root a square minus x square. Okay.
So I2 is equal to, what is the formula? X by 2 as it is plus a square by 2 sine inverse x by a. Bracket. X by 2 as it is means 32 minus x square plus a square by 2. A square is 32 by 2 sine inverse x by a. A square is 32, so a is 4 root 2. Root of 32 is 4 root 2. And limit 4 to 4 root 2. Okay? So therefore, I2. Now upper minus lower. Okay? एक step कर लेते हैं. X by 2 as it is. And 32 by 2 is 16. Sine inverse x by 4 root 2. Four to 4 root 2. Now upper minus lower. I2. Upper limit 4 root 2. Putting 4 root 2. Direct. Here 4 root 2 by 2 and 32 minus x equal to 4 root 2. 4 root 2 square is 32. 32 minus 32 0. Plus 16 sine inverse x is 4 root 2. 4 root 2 by 4 root 2 cut and 1. Direct लिखते हैं. And sine inverse 1 means pi by 2. Upper limit is over. Now lower limit. Lower limit is 4. 4 by 2 is 2. And here putting 4. 4 square 16. 32 minus 16. 16. And under root 16 is 4. Plus 16. Here putting 4. 4 4 cut. Sine inverse 1 by root 2. Pi by 4. Ready? Upper minus lower. So I2 is equal to, this is 16 pi by 2 means 8 pi. Minus 8 minus 4 4s are 4 pi. So I2 is equal to 8 pi minus 4 pi, 4 pi. And minus 8. Okay? 4 pi and minus 8. Okay? I2 is ready? I1 8 and I2 4 pi minus 8. So, area A equal to mod of 8 plus mod of 4 pi minus 8. So A equal to 8. So we know that the mod of 8 means 8 is here positive. Plus and mod of 4 pi minus 8 आपको चेक करना है कि भाई 4 pi minus 8 पॉजिटिव है कि नेगेटिव. तो pi means put 3.14. So 4 into 3.14 and minus 8 always positive. So plus 4 pi minus 8. Now 8 8 cancel. So A equal to 4 pi unit square is our final answer. Done? So here is your example number 4 and which is over. Okay. तो आज तो 2 सम हुए, एक नोट and 2 sums, and both the sums are lengthy. Okay. Example 4 over, it means example 1 to 5 all over. Question 1 2 3 4 5 over, 10 over, 11 over, 13 over. Now left 6 7 8 9, 6 7 8 9 and 12. So first part over. Okay. So now we will take these all sums, next sums in our next lecture. Okay.